रिलायबिलिटी का अंदर 4 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट है इट इज द कंटिन्यूड फंक्शनैलिटी, मतलब जो क्वालिटी के अंदर आपने जो फंक्शन किसी एक प्रोडक्ट का डिफाइन किया है, सम टोटल ऑफ ऑल दोस फंक्शंस, ये है पहला पॉइंट। दैट इसको आप ये भी कह सकते हो इंटेंडेड फंक्शन। इंटेंडेड मतलब जो कस्टमर चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, it should be continuing to meet the intended function under given operating condition. Okay, that is the second point. So second point क्या आ गया, ऑपरेटिंग या तो फील्ड कंडीशन, जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक ऑपरेशनल प्लानिंग मैट्रिक्स दिखाया था। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो इंटेंडेड फंक्शन एंड कंटिन्यूड वर्किंग अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन, इट मस्ट हैपन for a lifetime. Whose lifetime? Lifetime of the product. तो उसका मतलब यह है डिजाइनर must design the life of the product. Is it possible? Yes, it is possible. Fourth point है, ये तीनों चीज you should be able to say with a confidence, and that confidence is referred to as probability, or that probability is defined as reliability. तो रिलायबिलिटी को हम लोग, रिलायबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक यानी कि हाउ डू यू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट फंक्शंस कंटिन्यू टू परफॉर्म एज डिजायर्ड अंडर द फील्ड कंडीशन, दैट इज वन. सेकेंड इज हाउ डू यू मेक श्योर दैट इट कंटिन्यूज टू वर्क फॉर ए लाइफ टाइम. So let's try to take a look at the operational planning matrix once again. One among the very useful techniques that is used in reliability function deployment, I recall to have used this quite successfully in number of companies for building reliability, is the operational planning matrix, which also figures in the reliability function deployment flowchart. So if we look into the operational planning matrix, it has actually on the top, the stress divided into two categories. One can be referred as the normal stress. If we make a distribution of the stress for any parameter, this would cover about 95% of the stress limit. And this extreme stress limit would go beyond the 95%, maybe the last 5%. So that is being referred as extreme stress. For example, that if in a particular place in India, the operating voltage, we keep taking the records of the operating voltage time to time, the 95% of the operating voltage may be covered under this normal stress, and the topmost 5% could be considered at the extreme stress. So for any designer, it is important for him to know that for whatever product that he has designed, for every parameter, what is the 95% common stress level or normal stress level, and what would be the extreme stress level. Because if marketing department or sales department plans to launch that product in a particular area, knowingly that there could be extreme stress, but the designer has not prepared the product from that viewpoint, that may really exert a lot of pressure on the stress on the product, resulting untimely failure, which could also be called as a reliability failure. Can it be avoided? That is the question that we are trying to discuss here. So yes, a operational field condition, if it is mapped and then segregated into these two parts, normal and extreme, then at the time of design verification, the designer could very well check the performance of the product under these two levels of stress. We'll also discuss that what is the implication in the customer's mind for being able to meet this normal stress level and the extreme stress level, and could it really result in winning the customer or a repulsive behavior from the part of the customer to avoid the product.
On this side, we can see that there are two uh, cells. One cell is uh, both the cell actually has been plotted from the angle of the features and practices used by the customer, adopted by the customer. So one part is unavoidable feature practice, and another part is the avoidable feature and practice. So this is totally from the viewpoint of the user's control. I would say that these unavoidable features and practices are the basic practices for which the product has been bought by the customer. So without this, the product cannot be conceived. So therefore, if we try to take a look at the combination of unavoidable feature practices along with the normal operating stress level, that results in the normal use condition. So what is normal use condition? That means, say for example, the ambient temperature, or for example, the humidity level, for example, the dust level. So if they are coming under the normally what is felt at that particular area where the product has been sold. So we need to know that whether those basic functionalities of the product are the customers able to use it as desired in the normal stress. If it is not, then even in the entry zone itself, product may get rejected by the customers en masse. So it is designer's fundamental responsibility to address this. Without that, untimely product failure may really be resulted, and that can be avoided absolutely. If we take the combination of extreme stress for all the operating field condition along with the unavoidable practice or feature or basic practices, basically I call it must do practices. So this combination actually helps the product to face a competitive challenge. That means to say that if the product survives this extreme stress and works uh, appropriately, despite the stress being extreme, then we can call the product robust. That means robustness is what, by definition, that if the product continues to do its normal functionality, despite the fact that the stress level increases, without showing any adverse effect, then the product can be considered to be robust. And any robust product would definitely pose a formidable challenge to its competitors. So therefore, the extreme stress level could be considered to be important from competitiveness viewpoint. So marketing department, when they are planning to launch a particular product, and management in their product policy, if they consider the product for introduction in a particular area, for example, Ladakh faces very low temperature. For example, high altitude like Shimla or in Darjeeling, or even above that, maybe at Oli or such places. If a refrigerator is to be used, they would be facing on top of the low temperature, also the low atmospheric pressure. So it is required to be verified before taking a strategic decision that whether such kind of product really is required to be launched in those areas or not. There is another perspective. There are certain user practices and features which are not very common. They are rather unusual. They are departure from the expected practices. But some of the customers have the habit of doing that. Now, if those practices are coming under normal stress level, that is a very excellent uh, opportunity for the marketing department to do the product planning and capture some of the niche market utilization. And that may result in the product introduction from altogether different angle in the market and may demand a very high a demand from the part of the customer. We can give an example. For example, that many users have the habit of putting hot plate uh, with leftover food directly into the refrigerator. And there is a clear instruction in the refrigerator manual normally not to put hot
or warm products into the refrigerator, as they are known to create some kind of thermal shocks. So that should be avoided. However, if that practice continues there and the temperature is not much, and people have been keeping that, say, another 5 degree or so as a normal stress, but these are avoidable features. But this, despite that, the users have been doing that. And if the organization design department can really come up with the product parameters in such a manner they design that it is able to withstand that slightly higher temperature, then that will be very much accepted by the customers and could be quite useful. Because instead of really leaving it to be, for cooling purpose out, sometimes they may forget it to keep it in the refrigerator. So that could be quite helpful. But on the other side, if the same temperature is very high, that may be extreme stress level on the compressor. So we can say this is coming under dispute zone. So if the organization does not intend to really address that, there should be clear mention in their product brochure, product catalog, that temperature beyond so and so must be avoided. For example, taking directly from the micro oven and then keeping it in the refrigerator may cause the untimely failure in the refrigerator. So that could be uh, should be mentioned and should be underlined, so that such kind of practices could be avoided. It may really come under the dispute zone. I have earlier mentioned about one of the story of a radio being kept above the oven in a remote place, in a rural place, in an Indian village, resulting the radio catching fire. So definitely that would become coming under extreme stress and definitely unconventional practice. So company is not liable to really make any compensation under those kind of stresses. So let me repeat what I have been saying, that entry zone relates to the normal stress level for the operating condition under the conventional practices. This must be addressed. If it is not addressed properly, the product may not be able to really even make an entry. However, if the company introduces the product in an area where the stress level is known to be on the higher side, so it will be better if that the product is designed to be able to meet such kind of stresses, and then the product can be called robust, and then it will stand out in the competitiveness. And the third part I was saying, for the unconventional practices which are departure from the expected practices, if those features also can be accommodated in the design, that may result in a niche market acceptance by the customers. And company must be clear, designers must mention properly that beyond which stress level the product would fail, and they can be considered to be forbidden, abuse, and this is definitely coming under dispute zone. What we would try to do is that we would try to take this particular robust zone aspect further. So here we can see the extreme use zone, but which are coming under the unavoidable practices, must do practices. This is competitiveness zone, as I said earlier, and this is unavoidable and extreme operating condition combination. So this can be of two types. One is the occasional customer requirement may happen. For example, sometimes in this extreme peak summer season, the temperature touches, the mercury touches somewhere around 45 plus. So if it does not meet, this becomes a competitive issue. So therefore, company must understand thoroughly that what would be the fluctuating operating condition stress level, and if it is unavoidable by the customer, the product has to work there. Otherwise, it causes unnecessary negative reaction from in the minds of customer, which really creates a very good competitive edge if met by the designer. Another way is that regulatory safety requirement. Many products may really turn out to be unsafe at extreme stress level, and that may lead to product liability related problem. Suppose, for example, at an extreme stress level, but which is unavoidable by the customer.
if the product catches fire, that could really be quite dangerous. So this has to be met, otherwise company would face serious problem. With these operational planning metrics and this explanation, I think the reliability deployment, which we are now going to take up in the next slide, would be made much clearer. So I hope you are able to understand that top two could be very important from the angle of design, and that could give the company a very good top line. Okay. A niche market may create a different kind of segmentation. Core design flow chart for the product. मतलब क्या है इसका? इधर मैं आपको कोर डिजाइन एक्टिविटी कुछ ही दिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं, जिसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं फ्रॉम द फंक्शनल क्वालिटी डिजाइन एस्पेक्ट. इसको थोड़ा आप, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम क्वालिटी एरियाज, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट की योगदान इन डिजाइन फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फैक्ट्री. तो इसका क्वालिटी का शुरुआत होता है और प्रोडक्ट डिजाइन का शुरुआत होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी या तो उसका कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करते हो. जैसे मानिए कि हम लोग जब वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस एक टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रे है, उसके अंदर और एक टेक्निक. देन द यूज ऑफ कार्बन फिल्टर इज ऑल्सो अनदर टेक्निक. तो you may use all of them or you may use some of them. Okay, तो आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट है, मार्केट रिक्वायरमेंट है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी या तो कॉन्सेप्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी या तो कॉन्सेप्ट सबसे रेलिवेंट होगा, सबसे एप्रोप्रिएट होगा, वी डिसाइड दैट हियर. और उसके लिए टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट सिलेक्शन के लिए पहले तो एक बेसिक लेवल प्रोडक्ट का फंक्शन जो है, ये प्रोडक्ट जो हम लोग मार्केट के लिए एड्रेस करना चाहते हैं बेस्ड ऑन मार्केट प्लानिंग, तो इसके लिए एक प्रोडक्ट का जो बेसिक लेवल मैपिंग इसको चाहिए. से फॉर एग्जांपल दैट इफ आई एम सेइंग दैट मेरा प्रोडक्ट है टू ऑफर माय कस्टमर प्यूरिफाइड वाटर. डेफिनेशन क्या है मेरा प्यूरिफाइड वाटर का? जो पानी मैं घर में पीता हूं, मैं उसको कंसीडर करता हूं सेफ वाटर. लेकिन मैं जब घर से बाहर पैर रखता हूं, तब मुझे वो सेफ वाटर नहीं मिल रहा है, दैट इज आउट ऑफ माय एक्सेस. फिर मैं जब मेरा डेस्टिनेशन पहुंच जाता हूं, मुझे सेफ वाटर मिलता है. तो बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जब मेरे सामने सेफ वाटर नहीं है, ये कंपनी सपोज प्रपोज कर रहे हैं कि मैं वो ट्रांजिशन टाइम में मैं सेफ वाटर प्रोवाइड करूंगा. ओके, तो ये मेरा बेसिक प्रोडक्ट फंक्शनल मैपिंग है कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सेफ वाटर व्हिच इज फ्री फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया एक्सेट्रा, एंड आई विल बी गिविंग माय कस्टमर गुड वाटर इन गुड क्वांटिटी एट मॉडरेट कॉस्ट. ठीक है, और उसके आधार पे मैं देखूंगा मैं जो पानी को इनपुट लेवल में यूज करूंगा, उसको प्यूरिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी रहेगा, technologies या तो technology. Then what I am going to do is that I am going to discuss about functional planning. What is the functional planning? कि ये प्रोडक्ट और जो बेसिक लेवल में मैंने मैपिंग किया, टेक्नोलॉजी को मैंने सिलेक्ट किया, इसके लिए फंक्शन क्या क्या रहेगा. ये फॉर एग्जांपल इसका हार्मफुल बैक्टीरिया लेवल कितना रहेगा, इसका जो विटामिन्स मिनरल्स जो है वो लेवल क्या रहेगा. सो फलाना फलाना क्राइटेरिया आई एम डिफाइनिंग, सो दैट आई कैन कॉल इट ए फंक्शनल मैपिंग. वो फंक्शनल मैपिंग के बाद मैं जाऊंगा पार्ट्स प्लानिंग के ऊपर. ये अगर एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, मानी कि एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का डिफरेंट सब असेंबलीज है, सब असेंबलीज के अंदर पार्ट्स भी है. तो वो सारे पार्ट का जो है मैं उसको डिजाइन करूंगा. और ये डिजाइन मैं कैसे करूंगा, उसका 4 लेवल है जो हम लोग क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में जाके काफी थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करेंगे. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. प्रोडक्ट फंक्शन मैपिंग से गया टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में आया फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. उसके बाद मैं इंडिविजुअल असेंबली सब असेंबली पार्ट्स को डिजाइन किया.
और डिजाइन करने के टाइम में शायद मैं कैट कैम या तो और भी जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग किए हैं। फिर मैं मेरा डिजाइन फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस से मैं अपना जो डिजाइन है उसको वेरीफाई किया कि whether it will be really working against foreseeable failure modes। और उसके अगेंस्ट में मैंने रिस्क प्रायोरिटी नंबर हर एक पॉसिबल फेलियर के लिए हम लोग डिटरमिन किया, काउंटर एक्शन भी लिया और उसको मैं फिर टेस्टिंग किया। प्रोटोटाइप टेस्टिंग करने के बाद मैंने अल्फा टेस्टिंग किया। एक है अपना कस्टमर की वहां टेस्टिंग किया, या तो मेरा कुछ जाने पहचाने जगह है जहां पर फील्ड ट्रेस है और वो फील्ड स्ट्रेस के अंदर मैंने उसको चेक किया, उसको मैं कह सकता हूँ कि बीटा टेस्टिंग करने के बाद मैं फाइनली प्रोसेस को मैं मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ठीक है, तो मेरा प्रोसेस फाइनलाइज होता है डिजाइन एफएमई के बाद प्रोटोटाइप टेस्टिंग और उसके बाद अल्फा टेस्टिंग के बाद फाइनल प्रोसेस डिजाइन फ्रोजन हो जाता है। ठीक है, तो normally I will say that in many cases the prototype testing or the alpha testing may not be that inevitable part of the product design, लेकिन जहां पर डिजाइनर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है because it is first time design or they are not really be very sure that whether it will be working or not, prototype testing और alpha testing का रोल उधर काफी ज्यादा होता है। Now let us come to reliability function। So what you are seeing here are some yellow boxes, and these yellow boxes are the helpful addition in the design function to ensure reliability aspect also. How? Let's try to examine a couple of them. So I'm starting from the vision and mission of the company, जहां पर मिशन का डेफिनेशन मैंने पहला मॉड्यूल में दिया था कि मिशन बाय थ्रू मिशन यू डिसाइड द लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट के दौरान आप आपका जो टॉप रेवेन्यू जनरेट करोगे आप उसको आप डिसाइड करते हो मिशन स्टेटमेंट से। मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेट के आधार पे आप लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हो कि मैं क्या क्या करूंगा, कब करूंगा, कौन सी कोलैबोरेशन करूंगा, कौन सी टेक्नोलॉजी टाई अप करूंगा, ये सब स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर आता है। और मैं स्ट्रेटेजिक प्लान को निभाने के लिए मैं प्रोडक्ट पॉलिसी, किसी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले उसका प्रोडक्ट पॉलिसी डिटरमिन करता हूँ। जैसे ये जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ, ये कौन सी मार्केट सेगमेंट के लिए, इसका प्राइसिंग रेंज कहां पर होगा, एंट्री पॉइंट इसका लाइफ मैं क्या दूंगा, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका ऑब्सोलेसेंस कितना दिन में चलेगा और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना साल के अंदर आएगा। ऑल दीज आर कमिंग एज ए पार्ट ऑफ द इंटरनल प्रोडक्ट पॉलिसी और उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट का लाइफ प्लान करता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड कि अर्लियर डेज द प्रोडक्ट लाइफ was considered to be synonymous as reliability। आज के दिन में वैसा नहीं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जमाने में जब हम लोग एक सोफा सेट खरीदते थे तब हम लोग मान के लेते हैं कि एक सोफा सेट खरीद किया या तो एक कॉट खरीद किया, ये जिंदगी के लिए हो गया। You don't have to buy another sofa set or another cot, but that concept has totally changed now। When we launch with a certain lifetime in mind because we know कि आज के दिन में जो कस्टमर है they are very fashion conscious, so therefore they would need to change their furniture frequently, maybe over a period of 4 or 5 years। So I decide my product life planning strategically। Now the point is, if you want to extend the life, you have to spend money by choosing better quality material, by choosing better treatment method, etc., by buying material or sourcing material from such suppliers who might be charging you heavily। So product life planning is an integral part of product policy, and that is important before you finalize your part specification। I hope you are able to understand the link of this chain before the parts planning। So sometimes this product life planning could be important even for technology selection, but mostly I have seen no, it is coming at the product parts planning itself, okay, heavily। Let's talk about another one,
प्रोडक्ट फंक्शन मैपिंग जब आप कर रहे हो तब उसके साथ साथ आपको ऑपरेशनल प्लानिंग भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन कंडीशन मैपिंग से आपको पता चलेगा कि मेरे कस्टमर जो ट्रांजिशन टाइम में जिसको पानी की जरूरत है, वो पानी उनको जब मिलेगा वो कितना डस्ट लेवल में वो पानी पिएंगे, और जहां पर वो पानी का इस्तेमाल करेंगे उसको बॉटल खोलने के लिए उनको कितना स्ट्रेस की जरूरत होगा। मेरा जो क्लाइंट है वो बच्चा होगा, क्या वो बुजुर्ग होगा, क्या वो एडल्ट होगा, क्योंकि उनके लिए खोलने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो एक बच्चा के लिए मुश्किल होगा, बुजुर्ग के लिए भी मुश्किल होगा। So they have to really come up with the operational planning metrics under extreme condition and also under the normal condition. So this is also very important to decide. So क्या क्या आ गया? प्रोडक्ट लाइफ प्लानिंग आ गया, जिसको कॉस्टिंग के ऊपर, डिजाइनिंग के ऊपर काफी असर होता है। ऑपरेशनल कंडीशन मैपिंग, जिसको भी रिलायबिलिटी के ऊपर काफी असर होता है। व्हाट नेक्स्ट? वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट पार्ट्स प्लानिंग से reliability review. When you are conducting the design review, that time, from the angle of reliability, you re-look into your material selection, to your heat treatment, to your other treatment condition, which helps the durability of the product under the operating condition. So that also should be included during the design review. So include the reliability functions also part of the design review. Or based on these, you have the reliability features deployed and check that in the design FMEA. So when you are when you are doing the design FMEA against the part function, normally we write how the part function fails to do its intended function. There you ask this question also, how the part fails to do its intended function under falana operating condition. Then you will be getting the reliability failure mode also. Okay. So, and the remaining part remains same. I just tried to give you a conceptual level understanding of the reliability function deployment. I hope some of you have understood it.